Hello friends, myself Vedant Thakur. Today we learn standard 11th English medium, chapter number 2. Now next here is quantum mechanical model of atom. In this chapter we have to learn different models, for example, and different equation like Bohr's model, dual nature, Dirichlet dual natures principles, Einstein equations, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशंस. सो ये सारे जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हमने जो मॉडल देखा वो 2D मॉडल था, बट साइंटिस्ट नेम इज स्ट्रोडिंजर. Schrodinger has said that 3D models, यानी कि श्रोडिंजर साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि जो मॉडल होगा वो एटम का 3D होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट फॉर्म में होगी. तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, तो पहले वो इक्वेशन समझ लेते हैं, उसके बाद उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया वो समझते हैं. तो इक्वेशन ये है, डी स्क्वायर साइन डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस ई माइनस वी इंटू साइन इज इक्वल टू 0. In this equation we have two different quantities like E, V is a sine, 8 pi m h square, sin square, x square, z square. So श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन प्रपोज किया और वो मॉडल प्रपोज किया, वो मॉडल था 3D, इट मीन्स 3 डायमेंशन. सो वी नो दैट हियर x, y and z 3 axes can be included that. Therefore here psi is denoted by wave function. This equation is cannot given in textbook, so you can write down also in pencil in textbook. Wave function. Another equation here, x, y and z are represented axis. Which axis? So electron rotate around nucleus. This axis can be represented by x, y and z. Here E is a energy. Now V is also energy, but potential energy, and M is represented by mass. H, we know that Planck constant. Now another one term can be understand for this standard 11. Psi is a not physical significant value, but psi square is equal to value. It means probability of finding 90% of electron. So why, यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा, जो साइन की वैल्यू होगी वो फिजिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू क्यों नहीं है, और साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिल सकती है बट साइन की वैल्यू नहीं मिल सकती. तो उसका रीजन आपको, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्वांटम नंबर्स एंड द ऑर्बिट्स. सो ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, वो थियोरी जब हम लर्न करेंगे तब आपको उसका आंसर मिल जाएगा वो थियोरी में. सो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है, फिजिकल सिग्निफिकेशन वैल्यू साइन के लिए पॉसिबल नहीं है. साइन स्क्वायर की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 90% इलेक्ट्रॉन. ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आप ये थियोरी में आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. तो अब श्रोडिंगर इक्वेशन ने जो प्रपोज किया उसकी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर न्यूक्लियस कैन बी कंसिडर एज अ, नाउ
Now we can assume high microscopic observation for only one electron and observe that अगर आप एक ही इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसकी पोजीशन आपको सिर्फ ओनली यहाँ पे देखेगी, बट हमें पोजीशन का नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉन के पाथ के बारे में डिस्कशन करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो आपको थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स लेने होंगे एक ही इलेक्ट्रॉन के, तो आप डिफरेंट उसकी ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सोलिंजर ने सेम आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही फॉलो किया और ऑन काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन की फोटोज कलेक्ट की। तो उन्होंने देखा 3D स्ट्रक्चर में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ये पाथ में काफ़ी क्लोजली, इट मीन्स हाई डेंसिटी अरेंजमेंट कैन बी फॉलो अराउंड द न्यूक्लियस एंड देन away from the nucleus electron can be far distance from the nucleus and density is also very low as distance far. So this can be concludes that and the one fixed path can be assumed, it means this line, this area can be considered as a area of 90% of electron can be found in inner part of area and this area or this line boundary can be named as a orbitals or orbits. So Schrödinger named that area can be orbits or orbitals and this area can be 90% possibility of finding electron. Now another term we know and learn in next theory. So electron can be movement different position when the energy will be apply on the electron. It means अगर आप फोटोन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो भी वो ये डिस्टेंस पे आएगा, अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये डिस्टेंस पे चला जाएगा, और एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पे चला जाएगा। इट मीन्स ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो एक ही इलेक्ट्रॉन का है बट डिफरेंट पोजिशन एक ही इलेक्ट्रॉन की होगी। तो उसमें एक हमने बाउंड्री फिक्स की है, वो बाउंड्रीज के इनर पार्ट में जो एरिया है वो एरिया में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स वेव फंक्शन साइन स्क्वायर can be here denoted and this value can be find out. Now the energy of this level can be find out by using this equation 13.6 into z square divided by n square electron watt. Now this value can be find out by electron watt, it means converted into joule, so minus 13.6 z square, so yes z square divided by n square into value of E. E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. So 1.6 into 10 raised to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. So energy can be converted into electron watt to joule. So this equation can be used to find energy of electron. सो ये इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। तो उन्होंने श्रोडिंजर ने ये जो पार्ट था उसको 90% इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यही एरिया में होंगे, बाकी 10% इलेक्ट्रॉन उसके फार डिस्टेंस पे होंगे, उसकी डेंसिटी कम होगी। सो उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। तो ये जो आपका 3D मॉडल था, इट मीन्स 3 डायमेंशनल रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस एक्सिस कैन बी रोटेड, सो फर्स्ट सपोज हियर, सो this electron can be here started and completed his orbit, so one axis now motion by this orbit, it means second. so यहाँ पे वन डायमेंशनल, इट मीन्स वन एक्सिस पे हुआ, ये जो सेकंड एक्सिस हुई, और जो थर्ड एक्सिस है 3 डायमेंशनल में वो जो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा उसके पीछे से स्टार्ट होगा और पीछे से स्टार्ट होकर यहाँ पे आगे आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और वापस पीछे चला जाएगा। तो पीछे से स्टार्ट होगा फिर आगे आएगा, फिर वहां से न्यूक्लियस से पीछे, इट मीन्स यहाँ पे 3 डायमेंशनल रोटेशन अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी पॉसिबल फॉर 3D स्ट्रक्चर। सो श्रोडिंगर ने सिर्फ ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, अभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट अप्लाई नहीं हुआ, ये प्रोपोजन था उसका और ये इस टाइप का जो मॉडल था उन्होंने प्रपोज किया। आफ्टर सम इन्वेंशन द एंड फर्दर स्टडी ऑफ दिस Schrödinger quantum mechanicals model of atom. So after many experiment and after some times experiment will be contain some number of quantum can be find out by the Schrödinger. It means is given, the name is quantum number
So this after numerical value are find out and now some number can be find out by more experiment. So given name is quantum number. ये जो फर्स्ट क्वांटम नंबर इन्वेंशन हुआ उसका जो नेम था, उसका नेम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and this number can be represented by small n. Small n can be represented by principal quantum number. After this principal quantum number, another number can be find out by second, it means azimuthal quantum number, and this quantum number sign is small l. And after some times another experiment can be done and then find magnetic quantum number is represented by small n. Here small n, l, m is a magnetic quantum number, and last fourth can be find out spin quantum number is represented by small s. So four quantum number can be invention after experiment. This concept can be done by further study. So principal quantum number is n, azimuthal quantum number represented by small n, magnetic quantum number small m, spin quantum number s. And Schrödinger another sentence can be say here this is orbit or cell, and he say that in the orbit and the orbit or a cell, subcell can be also present in the cell. So another new concept can be say or proposed by Schrödinger. Subcell can be also present in the cell, and this is a number of picture can be collected or thousand or million then picture of only one electron, and these all are a position of one electron in different picture, and then all picture can be combined, so one picture can be done. And this is a boundary, it means consider as orbital, and this inner part of this orbit or cell 90% electron can be find this step, because high density can be seen by this area, and after far distance so density will be lower, so electron will be different position. Now first study start with first quantum number. The quantum number name is principal quantum number. Is represented by small n, and the first cell it means n equal to 1 is a first cell, n equal to 2 is known as second cell, n equal to 3 is a third cell, n equal to 4 is a fourth cell. And this particular first, second, third, fourth is a particular name. So first cell can be named by K cell. Second cell can be second cell n equal to 2, therefore second cell. So this cell can be say SHELL. So is a K cell, L cell, capital M cell, and fourth cell can be done and name N cell. So all cell can be represented K, L, M, N, first, second, third, and fourth. And according to this first principal quantum number, we can compare energy and the size of cell. So remember, this is an important point. With the help of principal quantum number, it means small n, first quantum number, we can find energy and the size of cell, information about energy and the size of cell. And what is relation between this energy and size of cell? So n equal to 1 has a small energy, it means greater energy than n2,
and greater energy than N3 is also greater than energy than N4. So energy is continuously increased when cell will be increased. In similar here, size, about size, first cell is smaller, second cell is greater than first cell, third cell is greater than second cell, fourth cell is greater than third cell. So continuously increasing order, energy and size will be increased from first cell to fourth cell. So these are a principal quantum number n, first cell k, second cell l, third cell m, fourth cell n. And now in next lecture we have to study about second azimuthal quantum number is represented by small l, and this cell this quantum number can be information about sub cell. So in next lecture we have to study second quantum number is name is azimuthal quantum number small l, and this information about sub cell. So in this lecture we have to learn Schrodinger. It means 3D dimensional structure can be given, and 3D, therefore x, y and z, three axes can be used. So in this, according to three axes, x axis, y axis and back side and upside go. So this back and go up, back and then go up, one horizontal, another is verticals, and then back side to move upside and then go around this back side. It means x, y and z, three type of rotation are around the nucleus. Suppose this is a nucleus, so around this nucleus electron can be rotated, or motion or path of electron is a three-dimensional x, y and z axis. So using this equation we can find 3D structure of atom by use of quantum mechanical model of atom. His sign is represented wave function, is a potential energy, axis, mass, Planck constant, and psi is not a physical signification value, but psi square is a probability of finding 90% on electron, and millions of graph can be found this type of diagram. And energy can be find out by using this equation, minus 13.6 z square divided by n square electron watt. Electron watt can be converted into joule, therefore using in place of a 1.6 into 10 raised to minus 19 joule energy. And now for principal quantum small n, l, m and n. So step by step we have to learn all quantum number. Now in lecture 1 quantum number n is completed. So is information about energy of cell and size of cell. And what is relation between energy and size? So energy and size both have increased from first cell to goes to fourth cell. It means increasing order, first, second, third and fourth, you goes first to fourth. The energy and size of cell will be continue increase. In next lecture we have to solve and learn azimuthal quantum number, it means small l, and there is information about sub cell. Thank you friends.